Hello students, I'm Rashmi Vadva, Assistant Professor of Science and Institute of Technology and Management. Student, today's topic is the Nyquist plot. Last lecture we discussed about the polar plot and the time response and the frequency response analysis. Now in this video, I'll discuss with you Nyquist plot. What do you mean by Nyquist plot? Nyquist plot is the combination of the polar plot for finding out the stability of the closed loop control system by varying omega from minus infinity to infinity. That means that Nyquist plot are used to draw the complete frequency response of the open loop transfer function. Basically, student, Nyquist plot is a plot which is a combination of a polar plot plus its mirror image. And last lecture we discussed about the polar plot now. So polar plot is what I'm finding out the magnitude and phase of j omega by putting s is equals to j omega by varying omega is from 0 to infinity, magnitude and in phase as well. So uh, when we plot a polar plot, then how to find out its stability by considering the point -1, 0 from when it lies outside that plot, then the system is stable. When lie inside the plot, the system is unstable. When our plot passes through that point, then the system is a marginally stable. So Nyquist stability helps in that criteria. So Nyquist stability works on the principle of argument, and it states that the p poles and z zeros are enclosed by S plane closed path, then corresponding GS into HS plane must encircle the origin p minus z times. So we can write the number of encirclement is n. N is the number of encirclement which is equals to p minus z. If the enclosed S-plane closed path contain any poles, then the direction of the encirclement in GS into HS plane will be opposite to the direction of the enclosed closed path of S-plane. Now, if the enclosed S-plane closed path only contains zeros, then the direction of the encirclement in GSHS will be the same direction as that of the enclosed path in the S-plane. Now let us consider the principle of argument to the right side of the S-plane by selecting it as a closed path. This selected path is called the Nyquist contour. When we are plotting the Nyquist plot, we can say that the closed path control system is stable if all the poles of the closed loop transfer function are on the left side of the S-plane. So the poles of the closed path transfer function are nothing but the roots of the characteristic equation. As the root of the characteristic equation is increases, it is difficult to find out. So correlate these roots of the characteristic equation as well. Actually, basically, जब हम closed loop control system के roots निकालते हैं, means to poles, तो हमें अगर पोल्स की लोकेशन पता चल जाए कि वो लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी पता चल जाती है. तो हमें नाइक्विस्ट की क्या जरूरत पड़ी जब हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी पोल्स की लोकेशन से ही पता चल रही थी. एक्चुअली दो रीजंस की वजह से हमें नाइक्विस्ट करना पड़ा. एक तो ये कि एक तो हमें नेचर पता चल जाता है सिस्टम का. दूसरा, जैसे जैसे सिस्टम क्वेश्चन के अंदर गिवन सिस्टम ऑर्डर बढ़ता है सिस्टम का, जैसे 2 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर है, कई बार s की पावर 5 भी हो जाती है, तो अप टू s की पावर 1 2 3 तक तो इजीली हो जाता है पोल्स रूट्स निकालना. बट जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ जाता है, इक्वेशन ऑर्डर बढ़ता है इक्वेशन का या क्वेश्चन का, तो बहुत मुश्किल हो जाता है रूट्स निकालने. जैसे मान लो 6 ऑर्डर है, s की पावर 6 है, तो उस केस में हमें रूट्स निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. जैसे जैसे ऑर्डर इंक्रीज करता है तो हमारे लिए रूट निकालना मुश्किल होगा, तो हम स्टेबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे. तो उस केस के लिए सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ नाइक्विस्ट क्राइटेरिया भर रहा है. इसमें अगर ऑर्डर ज़्यादा है क्वेश्चन के अंदर, सिस्टम के अंदर, तो हमें स्टेबिलिटी निकालने में प्रॉब्लम नहीं होती है. बिल्कुल ये पोलर प्लॉट की मिरर इमेज है और कुछ भी नहीं. हम पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे ऐसे कैसे, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था. जस्ट आप यहाँ पे चेंज नोटिस करेंगे कि क्या हमने चेंज, जस्ट उसकी एक मिरर इमेज ड्रॉ कर दी एंड टोटल इज अ नाइक्विस्ट प्लॉट. देन हम डिस्कस करते हैं, कोरिलेट करते हैं रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. द पोल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर same as the poles of the open loop transfer function, and the zeros of the characteristic equation is same as the poles of the closed loop transfer function. We know that the open loop control system is stable if there is a no open loop pole in the right half of the S plane. Yes.
When P is equals to 0, when there is a no open loop pole in the right half of the spin, then N is equals to minus of Z. And the closed loop control system is stable if no closed loop pole in the right side of S. अगर हमारे right side पे कोई भी pole नहीं है तो हमारा closed loop control system जो है वो stable है. Now, uh, then Z is equals to 0 and N is equals to P हो जाएगा. Nyquist stability criteria states that, what is this? Its definition is important. That total number of encirclement above the critical point, that is 1, 0, must be equal to the pose of the characteristic equation, which is nothing but the pose of the open loop transfer function in the right half of the S plane. The shift in origin to 1, 0 give the characteristic equation plane. Actually, this point is very important for the Nyquist contour, that is -1, 0. This point helps to find out the stability. Now, what are the rules for the drawing of Nyquist plot? And in this video, we will also discuss about the gain margin and phase margin. This gain margin, phase margin, gain crossover, phase crossover frequencies will help in body plot to find out the stability. Next topic is body plot. तो हम उसके लिए हमें gain margin और phase margin को भी cover करना है. Now, what are the rules for the Nyquist plot? Because same as the polar plot, just locate the poles and zeros of that open loop transfer function GSHS in the S-plane and then draw the polar plot by varying omega from 0 to infinity. If polar 0 present at S is equals to 0, then varying omega from 0 to infinity for drawing polar plot. Yes. जब हमने पहले S को j omega, पहले हमने poles और 0 plot कर लिया, then S को j omega put कर दिया, and then ओमेगा को 0 से इन्फिनिटी वेरी करके हमने उसके मैग्नीट्यूड में पुट करके पोलर प्लॉट ड्रॉ कर लिया. नाउ ड्रॉ इट्स मिरर इमेज. यस, मैं यही पॉइंट बोल रही हूँ बारी बारी कि जस्ट पहले पोलर प्लॉट ड्रॉ करो, फिर उसकी मिरर इमेज आपको ड्रॉ करनी है. एंड वैल्यू ऑफ ओमेगा वेरिंग फ्रॉम 0 माइनस इन्फिनिटी टू 0 if any pole or 0 present at S equals to 0. So polar plot draw karo and then draw its mirror image. Now next one, this last one. The number of the infinite radius half circle will be equal to the number of poles or zeros at origin. The infinite radius half circle will start at the point where the mirror image of the polar plots end, and this infinite radius half circle will end at the point where the polar plot starts. This is the important point when we are drawing the polar plot. We are drawing the Nyquist plot. जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी. आफ्टर जब आपने चलो Nyquist plot भी ड्रॉ कर लिया, so after drawing the Nyquist plot, we can find out the stability of the control loop control system using the Nyquist stability criteria. If the critical point lie outside the encirclement, then the closed loop control system is absolutely stable. Now, next is stability analysis using Nyquist plot. So there is some 2 or 3 definitions are here. From the Nyquist plot, we can identify whether the control system is stable, marginally stable, or unstable based on the value of these parameters. So 2 points are important, that is gain crossover frequency and phase crossover frequency, gain margin and phase margin. So आपको इन definitions को अलग से भी याद करना है. कई बार सिर्फ और सिर्फ ये definitions भी starting का जो first question है उसमें पूछ ली जाती है. What do you mean by gain? What do you mean by gain margin and phase margin? या what do you mean by gain crossover frequency and phase crossover frequency? तो 4 to 5 marks में इनकी just definition with formula पूछ लिया जाता है. So what do you mean by phase crossover frequency? The phase crossover frequency is that frequency at which the Nyquist plot intersect the negative real axis. Make sure that cut the negative real axis is known as a phase crossover and frequency, and it is denoted by omega PC. P stands for phase and C stands for cross, and omega for frequency. So this is called a phase crossover frequency. Now come to the gain crossover frequency. It is related to the magnitude. The frequency at which the Nyquist plot is having the magnitude is 1 is known as the gain crossover frequency, and it is denoted by omega G. G stands for gain, C stands for cross, omega stands for frequency. So वो frequency जिस पे Nyquist plot जो है magnitude is of 1 is known as the, जहाँ पर magnitude 1 होता है, is known as the gain crossover frequency. Now, the stability of the control system based upon the relationship between phase crossover frequency and gain crossover frequency is like that.
if the phase crossover frequency omega pc, yes, this 3 points are very important, make sure आप इसे ब्रीफ में छोटे छोटे पॉइंट्स बना लें कि ओमेगा पीसी इज इफ ग्रेटर देन ओमेगा जीसी, यानी कि phase crossover frequency is greater than the gain crossover frequency, then the system is stable. And if the phase crossover frequency is equals to the gain crossover frequency, when both are equal, then marginally stable. And if the phase crossover frequency omega pc is less than the gain crossover frequency omega gc, then the control system is unstable. Yes, these 3 points are important. When omega pc is greater than omega gc, system stable. When omega pc is great equals to omega gc, marginally stable. And omega pc is less than omega gc, unstable. इस तरह से short point बना के आप इसे याद रख सकते हैं. Now come to the gain margin and phase margin concept. The gain margin is equals to the reciprocal of the magnitude of the Nyquist plot at the phase crossover frequency. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. गेन मार्जिन किसके इक्वल होता है? जो ये नाइक्विस्ट प्लॉट का मैग्नीट्यूड है, किसका? एट फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे. फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे जो मैग्नीट्यूड है नाइक्विस्ट प्लॉट का, दैट इज गेन मार्जिन, वेयर एमपीसी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इन नॉर्मल स्केल at the phase crossover frequency. And phase margin क्या है? That is equals to the sum of 180 and a phase angle at a gain crossover frequency. This phase margin होगा 180 plus phase angle at the gain crossover frequency. जब आप gain margin निकाल रहे हैं तो वहाँ phase crossover frequency consider हो रही है. जब आप phase margin निकाल रहे हैं तो वहाँ gain crossover frequency याद है, opposites है. इस तरीके से आप याद कर पाएंगे कि अगर gain है तो वहाँ phase लेंगे और phase है तो gain crossover frequency consider होगी. तो ये दिस phi gc is nothing that a phase angle at a gain crossover frequency. देखिए फेज है तो गेन कंसीडर होगा, लेकिन है एंगल ही, तो इसलिए मेक श्योर कि कंफ्यूजन ना हो. नाउ इस केस में स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम बेस्ड अपॉन द दिस रिलेशनशिप बिटवीन द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन. जैसे हमने गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पढ़ी है, ऐसी गेन मार्जिन और फेज मार्जिन की भी स्टेबिलिटी हम कंसीडर करते हैं. कैसे? देखिए, if the gain margin gm is greater than 1 and the phase margin pm is positive, then the control system is stable. One first point is gm is greater than 1 and phase margin is positive, then system is stable. If the gain margin is less than 1 and phase margin is negative, तो अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल लेस देन 1 भी हो गया और पॉजिटिव का नेगेटिव भी होगा, तो सिस्टम मेरा अनस्टेबल है. And third point is if the gain margin GM is equals to the 1, अगर ये equal ही हो गया 1 के, and phase margin in 0 degrees, then the control system is marginally stable. Then we can define on the basis of this our stability. Now come to the Nyquist plot, Nyquist contour, Nyquist path. See, determine, दो क्वेश्चंस कराए हैं मैंने इसमें, आप देखिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर भी आप पूछ सकते हैं. Determine the closed loop stability of the control system whose open loop transfer function is this one. Gs into Hs is equals to K upon me S into 1 plus St. So what are the steps to plotting the Nyquist plot? Gs into Hs, put the S is equals to J omega. हमने J omega put कर दिया. G omega into H G omega is equals to K upon me J omega into 1 plus J omega T. Now rationalize this equation and separating the real part and imaginary part. This is the rationalization, and put the omega is equals to 0 in magnitude, that you will get the infinity. And when you are putting the omega is equals to 0 in phase, that is equals to minus 90. When you are putting on omega is equals to infinity in magnitude, you will get 0. And putting omega is equals to infinity in phase, then you will get the angle is minus 180. आपने इसके मैग्नीट्यूड में एक बार ओमेगा को 0 पुट किया, एक बार एंगल में ओमेगा को 0 पुट किया, फिर आपने इसके मैग्नीट्यूड में ओमेगा को इन्फिनिटी पुट किया और इसके ही एंगल में आपने ओमेगा को इन्फिनिटी पुट किया. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द correspondingly. Now the polar plot will be lie in the third quadrant. अब हमें यहाँ से कैसे पता चला थर्ड क्वाड्रेंट lie कर रहा है? बिकॉज एंगल जो है मेरा -90 से -180 वेरी कर रहा है. देखिए, this is my first quadrant. See the cursor of mouse. This is the second quadrant. This is the third quadrant, and this is the fourth quadrant. -90 to 180 जा रहा है, तो so this can be like that, -180 90 to this one. This plot is like that. This one. This is 0 से infinity. So draw its polar, draw its mirror image. तो ये आपने उसकी मिरर इमेज ड्रॉ की. ये पहले आपका पोलर प्लॉट है, आपका -90 से -180 जा रहा है, एंड 0 ओमेगा की वैल्यू जो है 0 से इन्फिनिटी वेरी करेगी.
सो ओमेगा की वैल्यू 0 एंड देन ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी। फिर भी मैंने इसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी है, देखिए द पार्ट ऑफ द ओमेगा व्हेन जीरो से इट इज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी इज ड्रॉन 1 एंड 0, 1 एंड 2, दिस 1 एंड दिस इज 2। ये तो मैंने ड्रॉ किया व्हेन ओमेगा इज बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी, एंड ऑन व्हेन द ओमेगा इज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू 0, द पॉइंट इज दिस वन। सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट आपने जो ड्रॉ किया है वो माइनस इंफिनिटी और 0 की वजह से है, which is the mirror image of 1 and 2. The semicircle decontour around the origin of S-plane is mapped into the semicircle path of the infinite region representing the phase minus 90 to 90. As we know that point minus 1 and 0 is not encircled by the plot n is equals to 0. Yes. अब देखिए जो माइनस वन जीरो है ये पॉइंट, ये इस प्लॉट के अंदर नहीं आया, कहाँ आया ये प्लॉट बाहर, and the stability is what when this point is lie outside this plot then the system is stable, if it is lie inside then the system is unstable. So this system when n is equals to 0, p is equals to 0, n is equals to z minus p, z is equals to 0. The number of the zeros or the roots of the characteristic equation with the positive real part is nil. Hence the closed loop system is stable. Because वो point वैसे भी उसके अंदर lie नहीं कर रहा, तो वहां पर क्या हो जाएगा सिस्टम मेरा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि वो पॉइंट बाहर है। Now come to the next question. Nyquist plot sketch करना है and determine the stability of the unity feedback control system. GS is equals to K upon में 1 plus ST1 into 1 plus में ST2. What is this? C. Put S is equals to J omega, G J omega, H J omega. S is equals to so K upon में 1 plus J omega T1 into 1 plus में J omega T2. Its magnitude, its angle, put the value of omega is equals to 0 in its magnitude and its phase as well, and put omega is equals to infinity in its phase and is as well as in magnitude. So vary from 0 to minus 180, equate the real part and the imaginary part, rationalize the equation 1. Firstly rationalize this equation, इस इक्वेशन को रैशनलाइज किया, इमेजिनरी और रियल पार्ट को जीरो किया। बिल्कुल अभी तक हम पोलर प्लॉट में ये सब चीजें निकालते आ रहे हैं। जब हमने रियल पार्ट को जीरो पुट किया तो वी गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा व्हिच इज इक्वल्स टू 1 बाय t1 into t2 under the root. So when we putting this omega 1 upon my t1 into t2 under the root in its magnitude, then you will get the k into under the root t1 t2 upon में t1 plus t2. This is the value. Now how to plot? हमने देखा था कि एंगल जो है वो वेरी कर रहा है इस तरीके से, सी yes, this is the from 0 to 90 and up to 180. So this is the polar plot. See, this is uski image, mirror image plus polar plot is Nyquist plot, and this value is k into t1 t2 under the root upon में t1 t2. The infinite semicircle arc of the Nyquist contour mapped into the origin, and n is equals to 0, p is equals to 0, z is equals to 0, और वैसे with this point जो है 1 minus 1 0 outside of the polar plot के बाहर है, the system is stable. Now come to the next question. Using the Nyquist criteria, determine the stability of the feedback system which has the following open loop transfer function: k upon may s square into 1 plus st, k upon may s square into 1 plus st, as putting the s is equals to j omega. Now when you are putting the k is equals to j omega, s is equals to sorry j omega, k upon may j omega square into 1 plus j omega t. Rationalize the equation 1 and separating the real and imaginary part. G j omega into h j omega. So k upon this plus में j into this. So this is your real part, this is your imaginary part. And you know the in denominator there is a s square, the double pole or at s equals to 0. So a small semicircle at the origin should be made. Is like that in this manner. I will see. I will show you in this picture.
and the point -1 in 0 is encircled twice. See, this from 0 like that 0 and from 180 and from 90. This is the polar plot. Draw its mirror image. Total is your Nyquist plot. So this -1 0 point lie inside the plot. Nyquist plot is mirror image plus polar plot. Yes. So this system is unstable because this point is encircled twice. होना भी ये एक ही बार चाहिए. Encircled once only, and also it is lie in the polar plot. So the system is unstable. Fine. So student, up to this video, I covered my Nyquist plot, polar plot, and gain margin, phase margin. And I'm just briefing this video in 2 lines is like that. In Nyquist plot is nothing, just a polar plot, android's mirror image, and -1 0 point को कंसीडर करो. वो उस प्लॉट के अंदर लाई कर रहा है तो ठीक है, स्टेबल लाई करेगा तो सिस्टम जो है मेरा अनस्टेबल है. अगर वो लाई द आउटसाइड तो सिस्टम मेरा स्टेबल हो जाएगा. अगर उसके पॉइंट के ऊपर से पास हो रहा है तो सिस्टम मेरा मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा. जो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इस लेक्चर में हमने पढ़ी, वो हमारी बॉर्डर प्लॉट में काम आएगी. तो नेक्स्ट वीडियो में हम बॉर्डर प्लॉट पढ़ेंगे. फिर स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट होता है नाइक्विस्ट प्लॉट को लेके या पोलर प्लॉट को लेके या और भी जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, फिर आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.